Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our English reader book by Vani publishers, and the name of the book is English Reader Hindi Anuvad Sahit Class 6. So now we are going to start chapter number 11, and name of the chapter is Animals in Danger. In the forest, lion kills zebra and eat them. Tigers kill deer and other small animals. Some animals eat only meat. They can live only if they kill and eat other animals. Large animals kill small animals. Strong animals kill weak animals. Some animals like the squirrel or the mouse are always afraid of the big animals. They hide in holes, in trees and in the ground. The big animals cannot easily find them, so they are safe. The porcupine is a small animal. It looks like a lovely little ball. It has sharp quills all over its body. It sticks them out when there is danger. Even the tiger is afraid of the porcupine. Some animals run fast to escape from other large animals. Deer can run very fast. Tigers cannot always catch them. A tortoise has a hard sheet cover its body with the heavy shell on its back. It crawls slowly, the poor tortoise. If a dog or a fox goes near it, the tortoise pulls its whole body under the shell. The tortoise is safe there. No animal can even break the shell as it is so hard. The octopus lives in a sea. It has small round body and soft to touch, but don't try to touch it. Otherwise its arms will lash you like a whip because it has 8 long arms. But big fish are not afraid of the octopus. When fish try to catch it, what does the octopus do? It has some dark ink inside its body. It throws this ink in the water and the water becomes dark. The big fish cannot see the octopus in dark water and the octopus runs quietly. Some animals play another trick. The house lizard leaves its tail behind if you touch it by the tail. But how can it live without a tail? That is not a problem for the lizard. It easily grows a new tail after some time. तो चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। जंगलों में शेर ज़ेब्रा को मारते हैं और उनको खाते हैं। चीते, हिरन और अन्य छोटे जानवरों को मारते हैं। कुछ जानवर केवल मांस खाते हैं। वे केवल तभी जीवित रह सकते हैं यदि वे दूसरे जानवरों को मारते हैं और खाते हैं। बड़े जानवर छोटे जानवरों को मारते हैं। शक्तिशाली जानवर कमजोर जानवरों को मारते हैं। कुछ छोटे जानवर जैसे कि गिलहरी या चूहा सदैव बड़े जानवरों से डरते हैं। वे बिलों में, पेड़ों में और जमीन में छिप जाते हैं। बड़े जानवर उनको आसानी से ढूंढ नहीं सकते, इसलिए वे सुरक्षित हैं। साही एक छोटा जानवर है। यह प्यारी छोटी गेंद की तरह दिखता है। इसके पूरे शरीर पर नुकीले कांटे होते हैं। यह उनको फैलाता है जब खतरा होता है। यहाँ तक कि चीता साही से डरता है। कुछ जानवर दूसरे बड़े जानवरों से बचने के लिए तेज दौड़ते हैं। हिरन बहुत तेज दौड़ सकता है। चीता उनको हमेशा नहीं पकड़ सकते। एक कछुआ अपनी कमर पर भारी कवच के साथ साथ अपने शरीर के ऊपर एक कठोर शीट रखता है। यह धीरे धीरे रेंगता है। बेचारा कछुआ। यदि एक कुत्ता या लोमड़ी इसके पास जाती है तो कछुआ अपने सारे शरीर को कवच के अंदर खींच लेता है। कछुआ वहां सुरक्षित है। कोई जानवर कवच को कभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि यह बहुत कठोर होता है। ऑक्टोपस समुद्र में रहता है। इसका शरीर छोटा, गोल और छूने में मुलायम होता है।
लेकिन इसको छूने की कोशिश मत करना, अन्यथा इसकी भुजाएं तुम्हें चाबुक की तरह कोड़े मारेगी, क्योंकि इसकी 8 लंबी भुजाएं होती हैं। लेकिन बड़ी मछलियां ऑक्टोपस से नहीं डरती। जब मछलियां इसको पकड़ने की कोशिश करती हैं तो ऑक्टोपस क्या करता है, इसके शरीर में काली स्याही होती है, यह इस स्याही को पानी में फेंकता है और पानी काला हो जाता है। बड़ी मछलियां काले पानी में ऑक्टोपस को नहीं देख पाती और ऑक्टोपस छुपके से भाग जाता है। कुछ जानवर दूसरी चाल चलते हैं। घरेलू छिपकली अपनी पूंछ पीछे छोड़ देती है यदि तुम उसे पूंछ से छूते हो, लेकिन यह पूंछ के बिना कैसे जीवित रह सकती है, यह छिपकली के लिए एक समस्या नहीं है। यह आसानी से कुछ समय बाद एक नई पूंछ पैदा कर लेती है। My dear kids, exercise part you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.